So good morning बच्चे. Good morning. So आज हम क्या करेंगे? What we are going to discuss? Balancing. In previous class, what we have discussed? Rules for finding the oxidation number. So last class, in previous class, you all aware how to find out the oxidation number. If you know how to find out the oxidation number, then by using that rules, we have to balance the equation. That is ionic equation. So in class 10th, you have balanced the equation by heat and trial method. But in class 11th or in higher classes, you are not going to balance the equation by heat and trial method. Because heat and trial method is not basically suitable for all type of equations. Okay, it is okay for the simple equation. But for complex equation, for ionic equation, the heat and trial is not fit. So this is the reason key, and most of the reactions which we discuss, that is redox reaction. So redox reaction के लिए क्या करेंगे? Means we use what? Simple method, heat and trial method? No. So for balancing the redox reaction, we have to use certain methods. And that are the two methods. So any ionic equation or any redox reaction will be balanced by two methods. One is the ion electron method, which is also called half equation method. And the second method is oxidation number method. So you can see here, I have already written here. So what is the first method? The first method is what? Ion electron method. And the second method is oxidation number method. So by both methods, we can balance any redox reaction. But for balancing any redox reaction by any one of the method, चाहे तो ion electron से करो या oxidation number method से करो. The one thing is which is required, that is medium. Means we have to know the redox reaction carried out in which medium, whether acidic medium or basic or neutral medium. So medium is also required. Because whatever the method you are using, it's fine. But that method also required the medium. Means the rules are different for acidic medium and for basic or neutral medium. Means these are for acidic medium different rule, and basic and neutral both have the same rule, but that is a different from acidic medium. So if any equation is given, there should be also mentioned the medium. Either medium is mentioned, we balance this equation in acidic medium or in basic medium. Okay, means medium diya hota hai, or sometime it is mentioned in equation H plus or OH minus. Okay, so let's see how to balance by these two methods by any one of the medium, in any one of the medium. Okay, so first we'll discuss balancing of ionic equation in acidic medium. ठीक है, दोनों मीडियम में करेंगे, but पहले हम acidic medium में discuss करते हैं. And in acidic medium, we'll discuss both methods, but first method we'll discuss ion electron method. Why it is called ion electron method? Because the equations are in ionic form and electrons also to be added. Or this ion electron method also called half equation. Question है कि why it is called half equation? तो ion electron method क्यों कहते हैं? क्योंकि ion और electron दोनों होता है इसमें. And why it is called half equation method? Because equation को हम दो half में divide करते हैं. Oxidation half and reduction half. This is the reason it is also called half equation method. ठीक है, अब हम बैलेंस करने जा रहे हैं by ion electron method. But balance के पहले we have to know about the rules. अगर हमें rules पता है, then we can balance. So what are the rules for balancing any ionic equation in acidic medium by this method?
रूल समझानेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं. So what is the first rule? What is the first? We start. Okay, there's so many methods. Many teachers applied different methods. But I am applying that method, which is, I feel it is very easier for you. Okay. So now we start the rules. The first rule is find out the oxidation number of each element. So सबसे पहला rule है, we have to find out the oxidation number of each element and write on the top of that element. Okay, is it clear? सबसे पहले हर एलिमेंट का तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे और उसके टॉप पे लिखोगे. After finding the oxidation number, we have to check which part is getting oxidized or reduced. Means after finding the oxidation number and see the changes of oxidation number, we can identify which is oxidized and which is reduced. Means we can identify oxidation half and reduction half. Then after, we have to balance each element in both sides except hydrogen and oxygen. ठीक है, पहले क्या निकाला? ऑक्सीडेशन नंबर. उस ऑक्सीडेशन नंबर से फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा पार्ट रिड्यूस हो रहा है. इसके बाद हमें हर एलिमेंट को दोनों साइड में बैलेंस करना है. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में देखना है कि बैलेंस है कि नहीं, सेम है कि नहीं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इतना करने के बाद अब हमें इक्वेशन को दो हाफ में डिवाइड करना है. ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट चेक किया एंड एलिमेंट को भी चेक कर लिया. इसके बाद इक्वेशन को तुमने दो हाफ में डिवाइड कर दिया. दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ एक हो गया, रिडक्शन हाफ सेकेंड हो गया. आफ्टर डिवाइडिंग द इक्वेशन इन टू हाफ, इक्वेशन को दो हाफ में डिवाइड कर दिया. And then after dividing the equation in two half, then the next rule is to add electron in both half. And how many electrons to be added? That we'll discuss with the example. यानी हमने इक्वेशन को डिवाइड किया दो हाफ में, उसके बाद यह दो हाफ में डिवाइड करने के बाद दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन ऐड करा. इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद नाउ वी हैव टू बैलेंस द ऑक्सीजन. The next rule is oxygen balancing. How we'll balance the oxygen? By adding water. How many water? जितने ऑक्सीजन डेफिशिएंट है उतने वाटर ऐड करने. किस साइड में? ऑक्सीजन वाले साइड में कि डेफिशिएंट साइड में? डेफिशिएंट साइड में. So after adding electron, we have to balance oxygen. And for balancing oxygen, we have to add water. And water should be added in that side where oxygen is deficient. जिधर ऑक्सीजन कम है उधर वाटर ऐड करना है. और कितने वाटर ऐड करने? जितने ऑक्सीजन डेफिशिएंट है उतने वाटर ऐड करने. ठीक. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद हम देन हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे. इसी स्टेप से हमें फॉलो करना है. ऑक्सीजन बैलेंस, then hydrogen balance. For hydrogen balancing, we have to add H plus in this side, again that side where hydrogen is deficient. After hydrogen balance, now we have to balance the electrons in both equation. दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने के लिए क्या करेंगे? बोथ हाफ इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय and such an integer number so that in both equation, electrons should be equal and cancel out. ठीक है? And then if electrons will be same in both equation and will be cancelled out, then we can write the overall equation. चलो sum up करो. First rule क्या था? What I said. Say quickly. हमें क्या करना? सबसे पहले क्या करना?
First, we have to find out the oxidation number of each element. हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसके टॉप पे लिखना है. ठीक है. ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या देखना है? विच पार्ट इज ऑक्सीडाइज्ड और विच पार्ट इज reduced, that is oxidation half and reduction half. हमारा यहीं से चेक हो जाएगा. इसके बाद हमें क्या करना है? एलिमेंट्स को चेक करना है. अगर ये रिक्वायर्ड है तो एलिमेंट्स, each element should be balanced in both side except oxygen and hydrogen. इसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है फोर्थ से. देन डिवाइड इक्वेशन यहां से हमें करना है. देन वी हैव टू डिवाइड इक्वेशन इन टू हाफ्स, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन. डिवाइड करने के बाद क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स टू बी एडेड इन बोथ हाफ. कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं? दैट विल डिस्कस. इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के बाद वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन by adding what? Water. And which side water should be added? Where the oxygen is less. जितने less है उतने water add करना. After balancing oxygen, we have to balance what? Hydrogen. How? By adding H plus. In which side? Where the hydrogen is less. जितने hydrogen less है उतने H plus add करने. Then after both equation multiplied by some number, integer number, so that in both equation electrons should be equal. ठीक है. तो नेक्स्ट में हमें इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है बाय मल्टीप्लाइंग इंटीजर नंबर. दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए. उसके बाद हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं? ऐड ऑन कर देते हैं. इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएगा एंड बोथ हाफ विल बी एडेड टू राइट ओवरऑल इक्वेशन. Right? So better we can see one example. So sorry. So if we take one example, we can easily understand. Okay. Let's suppose we are taking example MnO4 minus plus Fe2 plus gives Mn2 plus Fe3 plus. Which medium, बच्चे? We have taken which medium? Correct. Acidic medium. Okay. So what is the first point? Find out oxidation number of each element. यानी हमें सबका निकालना है. Mn का निकालें. If suppose Mn is X, oxygen कितना होता है? Oxidation number of oxygen is -2. And how many oxygen? 4. And what is the charge over here? -1. So equal to -1. What the X value is coming? +7. So that is oxidation number of Mn. So we have to find out the oxidation of each element and write at the top. +7 है, +7 लिख दिया. Correct? Fe. Fe is the elemental state. Elemental state में जो भी charge होता है वही oxidation number होता है. So what is the oxidation number of this? +2. Mn का भी क्या होगा? +2. Fe +3. सारे elemental state में है ना? So that the charge, whatever the charge, that is oxidation number. After writing the oxidation number of each element on the top, now check the elements should be balanced in both sides. How many Mn here? 1. इस साइड में भी 1 है. It's fine. How many Fe here? 1. This is also 1. So both side Mn and Fe balance. And what I told, we have to balance each element except oxygen and hydrogen. Correct? After balancing each element in both sides, now we can check oxidation and reduction. Okay.
फर्स्ट यू चेक Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +7 और इस साइड में क्या आ रहा है +2. क्या चेंजेस आ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज कर रहा है. ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय हाउ मच? +7 से +2 में गया. कितने से डिक्रीज कर रहा है? 5. And if oxidation number decreases, that is called which part? Reduction. Already I told na, oxidation number increases, that is oxidation, and decreases, that is reduction. तो Mn में oxidation number decrease कर रहा, तो Mn is getting reduced. और कितने से reduce कर रहा? 5 से. What is in case of iron? +2 to +3. क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है. +2 से +3 में गया. कितने से इंक्रीज करा? बाय 1. And oxidation number increases. That part is called what? Oxidation. And then after you divide, reduction part को अलग कर दो, oxidation part को अलग कर दो. Means which part is getting reduced? Mn. तो MnO4 minus to Mn2 plus. So this is reduction part, or we can say this is reduction half. And what about iron? 2 plus से किस में जा रहा है? 3 plus. तो ये क्या हो रहा? Oxidized means oxidation half. So we have to divide the equation into half. Reduction जो हो रहा है reduction half हो गया, and the second is oxidation half. After dividing the equation into half, that is reduction half and oxidation half, we have to add electrons. कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं? उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं जितने से ये डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है. Mn कितने से डिक्रीज कर रहा है? 5 से. तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे. और ये इलेक्ट्रॉन किस साइड में ऐड करना है? ये डिपेंड करता है कि रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है. रिडक्शन में किस साइड ऐड करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड. एंड ऑक्सीडेशन में राइट हैंड साइड. तो Mn के केस में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू बी एडेड? 5. तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने? इजीली आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया है. कितने से डिक्रीज कर रहा है उतने इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करने हैं. कितने से इंक्रीज कर रहा है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं. तो Fe में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू बी एडेड? 1. रिडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में एंड ऑक्सीडेशन में राइट हैंड साइड में. ये ध्यान रखना है, ये नहीं मिस्टेक करना है. ठीक है, डन. व्हाट इज द नेक्स्ट रूल आई टोल्ड? इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद अब हमें क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन. Now check the oxygen. How many oxygen in this side? कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको? 4 है ना? तो इस साइड में 4 है और इस साइड में 0. तो इधर भी हमें 4 चाहिए. तो जिस साइड में ऑक्सीजन डेफिशिएंट है उस साइड में हमें उतने ऑक्सीजन चाहिए by balancing water. So oxygen will be balanced by adding water in deficient side. And कितने water ऐड करने हैं? जितने oxygen deficient है उतने water ऐड करने हैं. So 4 oxygen, so 4 water. Right? After balancing oxygen, we have to balance hydrogen. Check. How many hydrogen this side? कितने hydrogen दिख रहे हैं? 8 ना? और इस साइड में नहीं है ना? तो अगर इधर 8 है तो इधर भी 8 चाहिए. तो 8H प्लस ऐड करेंगे. ऑक्सीजन के लिए वाटर ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस. कितने H प्लस ऐड करने हैं? जितने हाइड्रोजन डेफिशिएंट है. और किस साइड में? सेम साइड या डेफिशिएंट साइड? डेफिशिएंट साइड में ऐड करना है. ठीक, क्या हमने किया? यहां तक क्लियर है? Fe में कितने ऑक्सीजन है? नो ऑक्सीजन. एनी हाइड्रोजन? नो हाइड्रोजन. सो इज इट रिक्वायर्ड टू बैलेंस? नो. तो इस केस में सेकेंड हाफ में वी नो इट्स नॉट रिक्वायर्ड बैलेंसिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. तो कोई वाटर H प्लस ऐड नहीं करना है. डन. इसके बाद हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन फर्स्ट इक्वेशन? 5.
तो अगर दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए, अगर 5 इसमें है तो इसमें भी 5 होने चाहिए. इज इट 5? नो, 1 है ना. So we have to multiply it by such a number so that in both equation the number of electrons should be equal. तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बैलेंस हो गया ना. इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है, क्यों? ताकि वो कैंसिल हो सके. तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय सच एन इंटीजर नंबर सो दैट in both equation number of electrons becomes same and will be cancelled out. ठीक है. And then after you have to write, you have to add both equation and write overall equation. Sorry, दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना, ऐड ऑन करना है. ठीक है. जो चीज कैंसिल हो सकता है उसको पहले कैंसिल कर दें. व्हाट इज कैंसिल आउट हियर? 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन मींस होल इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 5 and then write overall equation. चलो, what we can write? MnO4 minus plus 8H plus 5 Fe2 plus. Anything is else in reactant side? No. ठीक है. प्रोडक्ट साइड आते हैं. Mn2 plus 4S2O plus 5 Fe3 plus. So this is the overall balanced equation. Once again, I am repeating. What is the first rule? Find out oxidation number of each element. Right at the top. ठीक है. Right at the top. Just a minute. So first find out the oxidation number of each element right at the top. दिख रहा ना? Already I told the same thing. So first find out the oxidation number of each element. Okay. Write it देखो. Mn का कितना है? 7 Fe plus 2 Mn plus 2 Fe plus 3. So first rule, find out the oxidation number of each element right at the top. And then see which part is getting oxidized. Mn क्या हो रहा है? +7 से +2 में जा रहा है. क्या हो रहा है? +7 से +2 oxidation number decreases. Decreases means reduction. कितने से डिक्रीज कर रहा है? 5. Fe +2 से +3 में जा रहा है. Means oxidation number increases by 1. Oxidation number increases, that is called oxidation. Then divide the equation into half. Reduction वाले को और oxidation वाले को अलग कर देते हैं. Means reduction half and oxidation half. Mn वाला reduction half है. Fe is oxidation half. ठीक है, as it is लिख दिया. MnO4 minus Mn2 plus Fe2 plus Fe3 plus. ठीक है. इक्वेशन को दो हाफ में डिवाइड करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे. कितने इलेक्ट्रॉन्स? जितने तुम्हारे चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है. ये 5 से डिक्रीज करा तो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 से इंक्रीज करा तो 1 इलेक्ट्रॉन. Then we have to balance oxygen by adding water. And then which side water should be added? Where the oxygen is deficient. After balancing oxygen, we have to balance hydrogen by adding H plus in the deficient side. जितना deficient है उतने H plus add करेंगे. And then electrons को balance करेंगे. दोनों equation में electrons should be equal. So it will be both equation will be multiplied by some integer number. 5 electrons है तो यहाँ भी 5 होगा ना. तो 5 से multiply करेंगे. And then electron will be cancelled out by adding both half. Electrons तो cancel होना ही है. Rest other things भी cancel हो सकते हैं. But electrons will be main reason of multiplying both half to cancel out the electron, to equalize the number of electrons so that they will be cancelled out. और फिर दोनों equation को add कर देते हैं. So we get the overall equation. So I hope it is clear. Yes or no? Okay, very nice. So I'm giving one example you solve at home, and tomorrow we'll discuss the next method. So I just posted in the chat box the one equation to solve at home.
Please do it and we'll check tomorrow.